रामायण मत देखते अभी क्यों हो जा रहा है सब बीच बीच में। रामायण मत देखो क्या होता है यार आपने बट अभी भी सेम है। हेलो हेलो गुड इवनिंग हु इज देयर। यार अभी भी सेम है, एक बार कंफर्म करो कोई। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे लाइफ में यार, पता नहीं क्या हो रहा है। गुस्सा भी आता है। हेलो कोई है यहाँ पे कंफर्म करने के लिए। अभी तो इट्स वर्किंग। ओहो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है। कम्युनिटी मॉडरेटर चैट पता नहीं क्या है। हेलो हु इज देयर। ये कायनात मेरे लाइव सेशन को बिगाड़ने में क्यों लगी हुई है। हाँ? थोड़ा सा अपडेट भी लग रहा है। हाँ सर 59 8pm Pomo. Wow, I think it's much better now. Is anyone there? I think it's better. कुछ अपडेट सा लग रहा है। I think it's better now. अब स्टार्ट बोल है। रिएक्शन वाला कोड इन प्लीज। ओके लेट इट बी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, मेरे ब्रेक का भी टाइम हो गया है। कोई कंफर्म तो करो। बैठ। ओके कहाँ है। अरे यार अरे यार वे कैसे उठी समझ आए सजनिया के मन में यार अगर कोई मार्च नहीं बताता तो पता भी नहीं चलता। अभी भी तो आ जाओ। स्टिल नॉट विजिबल। वेट होगा 5 मिनट। More than with my left from the date of the reception of the bills by other without the bill being passed by it. The speaker presides the joint sitting in the absence of speaker, deputy speaker, or the chairman of the Rajya or deputy chairman Rajya the person chosen by the MP, and this may preside. More than 6 months ago, okay. Joint sitting में 6 months have elapsed from the date of the reception of the bill. Then the speaker presides the joint sitting in the absence of the speaker. In the absence of the speaker, deputy speaker or the chairman of the Rajya Sabha or the deputy chairman of the Rajya Sabha or the person chosen MP may preside. Speaker के absence में क्या हुआ? Deputy speaker, deputy chairman, chairman joint sitting में स्पीकर तो होगा ही, एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर हो जाएगा।
स्पीकर हो गए, स्पीकर हो गए। एब्सेंस में कौन हो जाएगा? डेप्यूटी स्पीकर हो जाएंगे। और उसके बाद या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी प्रिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Chairman of Rajya Sabha and Deputy Speaker of Rajya Sabha also the person may preside in same order. Okay. कोई नहीं आ रहा, फिर से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोई समझ नहीं आ रहा। हाँ नहीं, प्लीज कुछ तो करो। Financial legislation in the Parliament. At the beginning of every financial year on the behalf of the President of Financial Legislation in the Parliament. At the beginning of every financial year, on the behalf of the President of India, a statement of the estimated at the beginning of every financial on the behalf of the President of India, a statement of the estimated reception government of the important before the on behalf of the President. पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने ये रखी जाती है जिसको so before late before both the houses is called analysis and budget. It also states the way and means of the meeting statement expenditure. The annual financial statement or the budget contains the annual financial statement of the budget contains estimated the revenue and analysis of the actual receipt and expenditure of closing year, the cause of the year, any surplus in the reception, the explanation of the economic policy and spending program is approved. Estimates of the other expenditure is submitted in the form of the demand. No demand for a grant can be made except on the recommendation of the President. The scrutiny of the budget proposals is done by the Parliament Committee on Estimates. Report about the effect of economy improvements and organization and administrative reform. Suggest alternative policies. Examine whether the money is well led. Suggest alternative policy. Examine whether the money is well led. Okay, so this is the form in which estimates are to be presented to the Parliament. The report of the estimates committee is now debated in the House. Okay, the competitive origin of the public purse. It is his main function to see not a paisa spent without the authority of Parliament. The report of the committee is laid before the Parliament is examined. The account committee is of Lok Sabha, having 50 members from that house. But 7 members of the Rajya Sabha are also associated with this committee in order to strengthen the Public Account Committee examines the money disbursed was legally available and used for the right purpose. Okay, who is there? The expenditure conforms to the authority which governs it. Every reappropriation has been made in accordance with the rules framed by the competent authority. As a representation of state and union territories in Rajya Sabha. सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। सो इट्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड आंध्र प्रदेश एंड देन बिहार। सो इट्स लाइक दैट। और वेस्ट बंगाल का भी सेम है 16. Okay. UP is representation of states and union territories in Lok Sabha. So this is again UP, Maharashtra, Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and Tamil Nadu, मध्य प्रदेश और ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? स्टेट है उत्तराखंड सबसे ज़्यादा होगा। हिमाचल प्रदेश तो स्टेट ही है ना। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज को देखो। दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 7। पुडुचेरी का उसके बाद है, चंडीगढ़ का एक।
ओके, ओह माय गॉड, पार्लियामेंट्री टर्म्स हो गया। कितना पेज बाकी रह गया भैया? अभी बच गए हैं 8 पेज। 7 पेजेस, 7 पेजेस अभी भी बाकी है मेरे, एंड इट्स आवर ब्रेक टाइम। सो हेलो, हु इज देयर? एम आई ऑडिबल? मेरा इससे पहले वाला लाइव खराब हो चुका है। somebody please confirm कि ये लाइव भी खराब हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। ओके, इट्स ब्रेक टाइम। The shop is closed. मेरा पढ़ने का मन कर रहा है अभी, छोड़ो यार, ब्रेक हटाओ। पार्लियामेंट्री टर्म्स क्या है? क्वेश्चन आवर द डेज बिजनेस नॉर्मली begins with a question hour, which question asked by the members are answered by the minister. The different types of questions are, पहला तो स्टार्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, लेट्स फॉरगेट द ब्रेक, बाद में ब्रेक ले लेंगे because I really need to study. Okay, question आवर का क्या सीन है? क्वेश्चन आवर में क्या होता है? Day business normally begins with the question hour, during which question asked by the members are answered by ministers. पहले स्टार्ट क्वेश्चन होंगे, फिर अनस्टार्ट, and which oral answer is required by minister on the floor or supplementary decides if the question should be answered or not. One member can ask only one start question. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, जिसमें कि स्टार्ट क्वेश्चन होगा, ओरल आंसर होंगे, बस एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछ सकते। और स्टार्ट में क्या होगा? इसलिए ऑन टेबल और द रिटर्न आंसर मिलेगा, और 10 days नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू आस्क सच क्वेश्चन। ओके, एंड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो बस एक ही क्वेश्चन इसमें ही पूछ सकते हैं, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या है? द वन विच कैन बी आस्क्ड बाय द मेंबर्स ऑन मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ अर्जेंट नेचर, ये अर्जेंट नेचर वाला है। इट इज़ फॉर द स्पीकर टू डिसाइड वेदर द मैटर इज अर्जेंट और नॉट। द मेंबर हैज़ ऑल्सो टू स्टेट रीजन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाइल सर्विसिंग नोटिस। ओके, ओह माय गॉड, रामा रामा रटते रटते। नेक्स्ट क्या है? 0 hour. This period follows the question hour and it generally begin at noon. 0 hour का स्टार्ट होता है नून में। ठीक है, यूजुअली द टाइम यूज बाय द मेंबर्स टू रेज वेरियस इश्यूज फॉर डिस्कशन। कट मोशन में क्या होता है? मोशन दैट सीक्स रिडक्शन इन द अमाउंट, of a demand presented by the government is known as cut motion. Such motion are admitted by the speaker discretion. It is the advice through which the general opposition can draw the attention of the government. So there are two types of disapproval of the seek the reduction in amount of demand. So कट मोशन किस चीज़ के लिए लगेगा? आपको डिमांड में कुछ रिडक्शन चाहिए। ठीक है, disapproval of the policy cut, which is to express disapproval of the policy underlying particular demand. तो इसमें क्या हो जाएगा? रिड्यूस बाय 1। ठीक है, इकोनॉमी कट में क्या होता है? आज फॉर द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट क्वांटिफाइड बाय द स्पेसिफिक अमाउंट, द एम इज टू अफेक्ट इकोनॉमी इन द एक्सपेंडिचर, तो इसमें स्पेसिफिक अमाउंट माना जाएगा। एंड टोकन कट में क्या होता है? इट इज अ डिवाइस टू वेंटिलेट specific grievances within the sphere of the government. So the grievances has to be specified, usually the motion in the form of the amount. Okay, I got it. मेरा ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया, ब्रेक लिया ही नहीं, ब्रेक टाइम ख़त्म क्या हो रहा है? टोकन टोकन is a device to ventilate
Specific crime within the sphere of the government responsibility. The grievances has to be specified. Usually the motion in the form the amount of the remand has to be reduced by. तो इसमें क्या होगा 100 रुपये कटेंगे. तो पॉलिसी कट में एक, इकोनॉमी कट में एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा और टोकन कट में क्या होगा 100. मतलब 100 रुपये का चलान कट गया, ठीक है, तो वो टोकन कट हो जाएगा. पॉलिसी कट में 1 रुपये काटेंगे, मतलब बस ऐसे ही काट रहे हैं, नाम के लिए काट रहे हैं. और इकोनॉमी कट में क्या होगा, स्पेसिफिक अमाउंट कटेगा. ओके, एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या है, इट इज़ अ मोशन टू adjourn the proceedings of the house so as to take further discussion some matter of the urgent the motion to adjourn the proceeding of the house so as to take up further discussion some matter of the urgent public importance. Any member can move the motion. Okay, so adjournment motion कोई भी कर सकता है. And if more than 50 members support the demand, the speaker grant the permission for. ओके, तो 50 लेकिन लोग चाहिए उसके लिए, मतलब समझो कि लाइव है तो लाइव करने तो 50 लोग चाहिए. तो उसी तरह स्पीकर grant the permission for the motion. The notice for such motion has to be given before commencement of the sitting on that day. रामा रामा रटते रटते बीती रे हमारी. More than 50 members support the demand. The speaker will grant the permission of the motion. The notice for such motion has to be given before the commencement of the day. Calling a case. A member may, with prior permission of the speaker, call the attention of the minister any urgent matter. तो इसमें भी कॉलिंग है तो कॉल कर रहा कि कोई अर्जेंट मैटर है, आ जाओ, सब सुन लो, बस ये बात है. और privilege motion में क्या, it is a motion moved by a member if he feels that minister has committed a breach of privilege. तो privilege में क्या है कि उसको लगेगा कि अपने privilege का गलत फ़ायदा उठाया, तो फिर वो मांगेंगे. Point of order. What is point of order? A member may raise a point of order if the proceeding of the House do not follow the normal rules. अगर नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं कर रहा कोई तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे कि भाई ये लोग तो नॉर्मल रूल भी फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या पॉइंट है यहाँ पे काम करने का, है ना. तो एक तरीके से पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है कि कोई नॉर्मल रूल फॉलो ना कर रहा. वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, एज देयर इज यूजुअली गैप बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एंड इट्स अप्रूवल. The vote of the government should draw some amount of the to meet expenses in the intervening period. ठीक है. बजट और अप्रूवल के बीच में जो गैप है उसमें खर्चा चलाने के लिए क्या करेंगे, वोट ऑफ अकाउंट मांगेंगे. ठीक है, वोट ऑफ अकाउंट पास करेंगे. गुली टोन के अंदर दराज allotted is the appointed time and speaker puts every question necessary to discuss all the outstanding matters in the connection with the person concludes the discussion on the demand of now. मतलब बस ख़त्म करो यार, डिस्कशन ही ख़त्म करो जल्द से जल्द. कोरम है, इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ क्या members whose presence is essential to transfer. Article 100 provides that the quorum of 1/10 होता है. कितना होता है 1/10. It's not 1/15th. It's 1/10. X by Y. This 1/10. Quorum is 1/10. Article कौन सा? Article 100. रामा रामा रटते रटते बीती रे हमारे रामा रामा रटते रटते. Quorum is 1/10. Article 100. The minimum number of कितना चाहिए minimum number. ठीक है. Not according to the constitution, the constitution minister stays in office only so long as it enjoys the confidence of the long Lok Sabha.
confidence of loss. Once the confidence is withdrawn, the government is bound to resign. The role of the parliament to procedure according to provided by the movement. Motion to certain this confidence. The motion is generally known as non-confidence. ये अब कॉन्फिडेंस नहीं रह गया मेरे गवर्नमेंट पे मेरा कुछ भी करता है आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन इट तो ये हो गया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ओके नॉन कॉन्फिडेंस सेंस मोशन क्या सेंस मोशन फिर से अटक गया है क्या ये एक बार देखो ज़रा कहीं फिर से तो नहीं अटक गया है ये लेट मी चेक ओके आई एम चेकिंग कि मेरा लाइव फिर से अटक गया है या क्या हो रहा है क्योंकि अब इसको बीच बीच में चेक करना भी ज़रूरी है I think it's good. Hello. I think it's good. Okay, that's fine. प्रभु जी मुझको भूल गए क्या दास की रटते रटते बीती ठीक है सेंसरी मोशन में क्या है डिफर्स फ्रॉम जस्ट एक मिनट और बस 1 मिनट और दे दो ये 2 घंटे का ना 54 के हो गया 2 घंटा हो गया शाम वाला ये शाम वाला है अभी कल वाला किया नहीं है हम 2 घंटे कैसे कर सकते हैं शाम वाला ये परसों सुबह वाला था अब शाम वाला किया अब कल वाला करेंगे राम राम रटते रटते बीती रे प्रभु जी मुझको रटते बीती रे कहाँ है यार मिल नहीं रहा है कहाँ गया अरे बाबा अरे बाबा कहाँ चला गया मिल ही नहीं रहा है मिल ही नहीं रहा है कहाँ चला गया है ओफो कोई कैसे यार कहाँ चला गया ये ओफो
नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, इसमें ही कर लेते फिर उसके बाद 54 किया, अभी 56 किया। ये है कल नहीं, कल कितना था, 27 का, उसका क्या 26 था ना, तो ये कल 26 था, 25 का मॉर्निंग किया, मॉर्निंग तक किया, ये 25 इवनिंग तक किया, इवनिंग तक ही किया, 26 का इवनिंग 27 का इवनिंग नहीं किया। अपडेट पहले का क्या होगा, लेकिन ये अभी नहीं किया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Sensor motion, ठीक है, father. Sensor motion differ from a non-confidence motion in that latter does not specify any ground on which it is based. So, sensor motion में क्या होता है कि ground नहीं है इसमें. Sensor motion differ from the non-confidence motion in the latter does not specify any ground on which it is based, while the former has to mention the charges against the government for which it is being removed. तो नॉन कॉन्फिडेंस में यू हैव टू मेंशन द चार्जेस, लेकिन सेंसर मोशन में ऐसा नहीं है। लेट नहीं 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 उल्टा होगा यार, फॉर्मर हैज़ टू मेंशन, सेंसर मोशन में है, नॉन कॉन्फिडेंस में नहीं है। लैटर डज नॉट, अच्छा ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस में डज नॉट स्पेसिफाई एनी ग्राउंड, while the formal mention the charges for which it is being moved. तो सेंसर में you have to specify the reason, बट नॉन कॉन्फिडेंस में कोई रीज़न नहीं चाहिए, मतलब ग्राउंड नहीं चाहिए आपको, एंड दिस में ग्राउंड चाहिए, ठीक है। सेंसर में सेंसर में अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर फॉर फेलिंग टू एक्ट और फॉर सम पॉलिसी, मतलब ये इंडिविजुअल के लिए भी लग सकता है और आपको किसके लिए लग सकता है, इंडिविजुअल के लिए लग सकता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट नॉन कॉन्फिडेंस बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लगे। एक काम करो, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है टेबल, वहाँ से देख लेना, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। टेबल लक्ष्मीकांत, ओके लेम रख, ठीक है। अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओके, reason for the censor must be precisely enumerated. The speaker decide whether or not the motion is in order, not no leave for the house is required for the moving it. क्या है, the speaker decide whether, एक मिनट, क्या है, रीज़न फॉर द सेंसर मस्ट बी प्रिसाइजली इनमरेटेड, मतलब रीज़न बताना है आपको। द स्पीकर डिसाइड्स वेदर
or not, the motion is in order, or and no leave of the house is required for moving it. No leave of the house is required for moving it. मतलब what does it mean? ChatGPT. कहाँ गया सर ChatGPT सर जरा चाहिए आप It is written for sensor motion that no leave of the house is required for moving it. What does that mean? The line you're referring is almost certainly about simple sensory motion. अरे भैया sensory motion नहीं sensor motion है ये ChatGPT ना मम्मी क्या करते रहते हैं सेंसर मोशन है भाई ये बायो बना दिया इसको सेंसर मोशन पॉलिटी पॉलिटी got it. This is not polity. This is biology. Very nice. Sensor motion leave permission. This is the sensor motion can be moved without taking prior permission of the house. No prior. क्या है? Polity for sensor no leave. मेरा दिमाग मत खराब करो तुम. लीव है लीव. सोचो तो टाइप ही कर लेना चाहिए था. पागल. Without taking the no leave of the house is required for me. ठीक है. The sensor motion can be introduced directly in the Lok Sabha without taking prior permission or leave from the house. Leave is equal to prior permission. कैसे? No leave of the house. The member does not need prior approval of Lok Sabha to move. The censor motion criticizes the government or it is to specify it can. Leave is equal to prior permission. If passed, it shows it is equal, but the government does not have to resign. ओके सेंसर मोशन अगर पास होता है तो डिसअप्रूवल बस ये शो करता है इसके लिए आप रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है बट ऐसा नॉन कॉन्फिडेंस में नहीं है नॉन कॉन्फिडेंस में यू हैव टू रिज़ाइन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू and in non-confidence motion it is mandatory to resign. क्या आपका यही पता नहीं है? Yes, you are understanding correctly. Let me state it clearly. An example is since the motion moved against specific policy, no leave of the rule to pass and to move it. It shows disapproval. Passing the censor motion only expresses disapproval, whereas passing the non-confidence motion compels Parliament to resign. Are you sure leave means prior permission? Prayer नहीं prior permission. Leave of the house. ठीक है. Prior permission. Okay, I'm sure. Yes, I'm sure. In parliamentary procedures, the parliament without leave is a technical term. Leave of the house is written. Leave the house is required. इसमें leave of the house is not required. इसमें at least 50 members must support it before it admitted. Without prior permission, leave has meant formal permission. Leave of the house refers to prior permission. Tell me.
first prior consent. Prior consent. ए मेरी प्यारी वतन, ए मेरी बिछड़ी चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। कॉपी हो जा, कॉपी 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 यार। चलो ठीक है। तू ही मेरी मेरी प्यारी। कहाँ गया? क्या बैठा? ठीक है, लीव ऑफ द हाउस मतलब हो जाता है आपको, क्या हो जाता है? This means that there should be a prior permission. Okay, prior permission, ठीक है. This is details. Details. Okay. कहाँ गया? Against the council of ministers of the section enumerate the speaker decide whether you have no leave of the house is leave of the house का मतलब ये कि परमिशन चाहिए आपको. Lame duck session. Session held when a new parliament has been elected but the old parliament meets for the last time. नहीं 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 32 हो रहा है. Lame duck the session held when a new parliament has been elected but the old parliament जो नहीं elect हो पाते उनको lame ducks बोलते हैं. Lame ducks are the members of parliament who are not elected. Session the old parliament meets for the last time before it is dissolved. And बात ये है कि सारे लेम डक नहीं है, उसमें कुछ ही लेम डक्स हैं, बट द सेशन इज ओवरऑल कॉल्ड लेम डक सेशन. सैडो कैबिनेट का क्या सीन है? तो सैडो कैबिनेट में आपको पार्लियामेंट प्रैक्टिस प्रेवलेंट इन वेयर सीनियर मेंबर of the opposition cover the area of responsibility. This they will form a cabinet together elected to the government. लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या है भाई? बहुत टाइम हो गया, 54 हो गया, 54 है पेज, अभी 59 तक पहुँचना है. चलो खत्म है बस थोड़ा सा. गवर्नमेंट हैज गिवन स्टेट statutory recognition to the leaders of the opposition. Government has given statutory recognition to the leaders of opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. To the leaders of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha given statutory recognition. Recognition to the leaders of लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों में. अपोजिशन राज्यसभा में क्यों होगा? अच्छा है सही. लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों में, सच में लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों में है. एक बार इसको भी देख लेना ना तो प्लीज़. इसमें नहीं दिया है या अपोजिशन दोनों में तो नहीं दिया. एक बार देख लेना. हाँ ऐसे देख लेना पहले से. ठीक है. तू ही मेरी रब है, खुदा है तू ही. चलो ठीक है, इसको लक्ष्मीकांत से एक बार जल्दी से देख लेंगे.
ठीक है. Government has given statutory recognition to the leaders of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha necessary legislation to this effect was passed by Parliament in Manila and rules framed thereunder were brought under and the first time was given the status of honor Y.B. Chavan of Congress when opposition in Lok Sabha with rank of a cabinet minister. Funds हो गया जल्दी ऐसे बस खत्म है. हाँ. Article 267 of the Constitution empowers Parliament and Legislature of the state to create a contingency for the India or for a state. Contingency 1 पूरी यूनियन और स्टेट एज ए केस अनफोर्चुनेट एक्सपेंडिचर है. आर्टिकल 267. कौन सा आर्टिकल है? 267. ठीक. Extend the power of Rajya Sabha. A bill cannot be introduced and amended. Rajya Sabha has no power to do that. The Speaker of the Lok Sabha has sole ये deciding. ठीक है. Though the Rajya Sabha can discuss, it cannot vote for public expenditure and तो discuss कर सकते हैं. Though the Rajya Sabha can discuss expenditure, the has not submitted vote to the Rajya Sabha. The Council of Ministers is responsible to Lok Sabha and not to the Rajya Sabha. ठीक है. Council of Ministers. ठीक है. Rajya Sabha suffered by reason of its numerical minority. It is all deadlock. Deadlock in the joint sitting. Parliament can legislate on a state subject only if Rajya Sabha resolves. State subject only if Rajya Sabha resolves for this by 2/3 majority. कौन सा majority चाहिए आपको? 2/3 majority. New all India services can be created only by Rajya Sabha with 2.2/3 majority. Mahadev. चलो ठीक है. इतना तो हो गया. गवर्नर चाहिए. दो 3 पेज है. स्टेट लेजिस्लेचर भी है बाबू. स्टेट लेजिस्लेचर कितना? So it's 5:38. Okay, चलो ठीक है. पार्लियामेंट हो गया. अब गवर्नर करना है. गवर्नर तो हुआ है मेरे पास. मेरा the governor of the state is appointed by the president and holds the office of president of the president. ठीक है. So president in 35 years of age. 30 years नहीं, 35 years. Must hold or other. ठीक है. फिर ये करूँगा. Appointed by president, pleasure of president, 35 years. Union or the state. If a member of the legislature power, he ceases to be the member of immediately. After such a member of legislature हो सकता है. Especially by the execution. That is low by 5 resignation. So there is no bar to a person being appointed more than once. There is no bar to a person being appointed. अरे यार. No bar मतलब कि हमेशा नहीं. हमेशा. Here it is given that there is no bar to a person being appointed governor more than once. Is it true? And is it true about president as well? And even after their term, let's see. Term.
Uh, Here it is given that no matter the person being over more than one is it toward the president as well. Alvarez क्या है? Uh, yes, it's up there. There is no consider bar on the opening. More than governor of the same state, person can be governor of the same state, which is consistent. Appointment of the president can a person become president? अरे यार ये बात नहीं था. मेरा क्वेश्चन ये था कि ओफ it is given that there is no bar to a person appointed as governor more than once. Is it valid even after their service term? Is it also true for the president? Behraj RGPT. Yes, it's completely valid both after completion of the term more than once. ठीक है क्या? Yes, it is valid even after the service term is over. The governor is appointed with no restriction. क्या? Reappointment की बात कौन कर रहा है बेवकूफ? The governor appointed. Oh. She Mahadev, पागल है ये. What's the bar? Unappointed person. मेरा दिमाग खराब. The line is there is no bar to a person being appointed governor more than once. This is very natural when you are not. There is no bar to the person appointed more than once. There is no constitutional restriction or must prevent the person from being appointed. But bar alone never means validity. यार एक तो ये there's no bar for religion. There's no bar. Okay, tell me, can governor or president get arrested after their service term? President को कौन arrest कर रहा है? Yes, the governor and president can be arrested after the term ends if they have committed an offense. No, they cannot be arrested while they are in office. No criminal proceeding can be initiated against them. They cannot be arrested after their no longer a 361. Okay, can be arrested tried in the court can be not absolute and delay is legal. Okay. ठीक है after limiting the office the governor or president can be arrested and tried like any ordinary citizen and this is article 361. Okay. Mahadev appointed by the president pleasure of the president should be 35. There's no bar मतलब कि it is allowed कि दो बार एक बार से ज़्यादा वो गवर्नर बन सके. यार ये लीगल टर्म्स ना मेरे सिर पे तांडव करते हैं. Is it true that a governor can be appointed any number of times like president?
While his cavalry yes, it is true. The governor, like the president, can appoint any number of times. There is no constitutional agreement. ठीक है बस करो. So there is no constitutional bar on. Okay, ठीक है. कहाँ से लग गया? कोई कैसे इन्हें ये समझा. There is no bar to oppose. भाई बस ये करो कि गवर्नर कितने बार भी रिपॉइंट हो सकता है. गवर्नर can be appointed any number of times. Appointed any number of times. बस बात खत्म. ठीक है. क्या appointed why an appointed governor because it would save the country पैसा. If the governor is elected by direct vote friction हो जाएगा, expense हो जाएगा, ये सब पता है. बस करो. हो गया. A second man of the party may get elected as a result of the method of election. The power of the governor has no diplomatic or military powers, but he has executive ये तीनों power है इसके पास. ठीक है. If the governor has the power to appoint council of minister and the members of the state public किसका कर सकता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर सकता है स्टेट वाला. एडवोकेट जनरल को कर सकता है. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कर सकता है. ठीक है. ऐसा क्वेश्चन बना लो. दिस कैन बी कंफ्यूजिंग. सो यस. The minister as well as advocate general hold office during the place of the governor. The minister as well as the advocate general holds the office during the place of the governor, but the members of the state public service commission can be removed only the अच्छा ठीक है. But the members of state public service commission can be removed only on the report of the Supreme Court. In some case और एडवोकेट जनरल किस साइड आएगा. गवर्नर हटाएंगे. The governor has no power to appoint judges of the High Court. He is entitled to be consulted by the president in that matter. Hi, lovely smile. How are you? After a long time. Hello. Again, not audible. क्या मतलब है. कहा था गवर्नर पे क्या कर रहे हैं. जैसे कर रहे थे ना. गवर्नर का महादेव 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 तो जाए थे. कहाँ तो पहुँची हूँ. बहुत ही कम हुआ है अभी. 81 पेजेस है. महादेव दया दया करके. अभी 7 बज रहे हैं. मतलब 6 बजने वाले हैं. 6 से 8 2 घंटे में हो जाएगा. अब एक काम करो तुम. 6 घंटे का कितने घंटे का है. 6.6 आवर्स का. पूरा करना भी नहीं है. You don't have to do all. तो अभी कितने 2 घंटा बचा ना. कितना बचा. 2 घंटे बचा. 6 से लेके 8 तक बचा है. 2 घंटे. तो आपको मिल जाएगा 6. चलो ये तो 6 10 7 10 12 18 20 मिनट 80 मिनट है. And we have to do कितने पेजेस हैं. So this is ये तो अभी हो जाएगा. 4 4 8 4 12 4 16 4 18 4 20 है. तो 8 हो जाए. 2 4 8 4 मिनट ईच में कर लो. फिर रिविजन भी है तुम्हारा.
देखो एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी बदलेंगे एंड मेरा पूरा रिजल्ट इसी पे डिपेंड नहीं करता, तो वी कैन रिवाइज इट अगेन, ठीक है। क्या है, ईजी हो गया, प्रेसिडेंट हो ही रहा है, मॉडर्न रिवाइज कर लेते हैं और बाकी ये सारा हो जाएगा, पॉलिटी ये सारा, ये भी पॉलिटी, ठीक है, और मॉडर्न रिवाइज कर लेंगे, बस बात खत्म। चलो ठीक है, the governor has no power to appoint judges of the state high court, but entitled to be consulted by the president in the matter, like the supreme high court के judges को कौन appoint करता है, तो this is president. Like the president, the governor has power to nominate member of the Anglo-Indian committee to the Anglo-Indian वाला थोड़ा अपडेट देख लेना इसका क्या है, this is important. उसके बाद to the legislative council, the governor can nominate person having special knowledge like cooperative and social services. Cooperative member is not included in corresponding list of the Rajya Sabha. पता है, मैं तो साथ चलते जब legislative governor is a part of state legislature, but and he has the right of addressing and sending messages and the summoning of the legislative. The governor has the power to grant pardons, reprieve, respite and remission और the president की तो मतलब तो शॉर्टकट में दिया ना, emergency the governor has no emergency powers to counter external, I know शॉर्ट में दिया है बट जितना टाइम है उसके अनुसार यही कर सकते हैं, अभी मत दिमाग लगाओ क्योंकि पॉलिटिक ख़त्म करना है, अभी परफेक्शन नहीं कर सकते अभी, हाँ वी कैन नॉट अफोर्ड परफेक्शन राइट नाउ, अभी हो जाए वही बात है, ठीक है, आर यू विद मी, पक्का कंप्लीट करोगे सभी सब्जेक्ट, दो इतने दिन से क्यों परेशान क्यों है, बैठ में पा रही हो ना, पता है कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे उधर बनना है, पता मत सोचो, ठीक है, अभी अगले तुम रिवाइज कर पाओ फिर नहीं कर पाओ, ठीक है, around rebellion, to the president of the government cannot be carried out by themselves. Governor only the president rule over the chief minister and the state council of ministers. Chief minister is the head of the state council. The chief minister is the governor. Same is appointed by governor. The other minister appointed by governor. Any person may be appointed by the governor minister. May be appointed a minister, but he must become member of legislature within 6 months of such appointment. तो कितने मंथ्स के अंदर बनना है आपको, 6 मंथ्स के अंदर, okay, 6 months stay. I think you should note it क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसमें कितना है, add in notes, ठीक है, 6 month के अंदर चाहिए, उसके बाद क्या है, the council of ministers is elected responsible to the legislative assembly but individually responsible to the governor, ठीक है, तो this is something
दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का है, बट इंडिविजुअली क्या है, गवर्नर को। कोई कैसे इन्हें ये समझाए, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर सिमिलर टू द, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर। Discretionary function of the government, the function which are specially required by the constitution. The function which are specially required by the constitution to be exercised by the government and his discretion are the function which is specially required by the constitution to be exercised by the government in his discretion are the governor can determine the amount payable by the state. The government is appointed to administration. ये कर लो कि डिस्क्रिशनरी फंक्शन क्या क्या है, लक्ष्मीकांत पे देख लेना जरा। एडवोकेट जनरल मेरा हो चुका है, बट कर लो, ठीक है। He is appointed by the governor of the state and also office during the, so by the governor, nature of the governor, only person who is qualified to be judge of high court can be, or he receives such remuneration as the governor may determine. He has a right to speak and but no right to, ठीक है। कहाँ गया? State legislature. Some states have bicameral legislature. The 7 states have two houses are. The 7 कितने स्टेट में है? 2 लेजिस्लेचर 7 में। अपडेट थोड़ा देख लेना उसका क्या है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, the state having 2 houses are Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Jammu Kashmir. You have to memorize it. The strength of legislative council स्टेट का क्या होता है, बिहार के 75 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बारे में बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का 50 है, बिहार का 75 है। बिहार का 75 है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। Okay, in the remaining states, the legislature, unicameral and has legislature for the creation of the evolution 169 है। The size of the legislative council may vary, but its membership should not be more than 1/3 of the membership of legislative assembly, but not less than 40. This is something important. तो ये हो जाएगा 1/3 होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज, और नॉट मोर देन और नॉट लेस देन 40. Legislative council is partially nominated and partially elected body, so it's not completely nominated. हाँ वही राज्यसभा की तरह ना। Election to the legislative council is direct and in accordance with the proportional representation by single transferable vote. 5/6 of समय समाप्त होता है। Oh my god, I'm tired. कितना पेज बाकी रहेगा? अभी कितना है? 4 1 4 8 4 6 4 24 24 पेज है भैया।
24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Where's the 24 pages? Hello, who is there? Lovely smile. Hi, hi, hi. Okay, so it's break time. Who is there? Is there anybody to talk? या फिर मेरे को जाना चाहिए अब. Okay, this is break time. I'm going. मेरी माता श्री आई हैं, उनसे मिल लूँ थोड़ा. Okay, bye. I'll be back in 10 minutes or 9 minutes. Bye, 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 bye.
Hi, who is there? I am back. I am back. Is it अभिजीत? हेलो, तुम ही हो क्या अभी? हे अभिजीत, कौन है अभी लाइव? Who is there? Who is there? Hello, hello, hello. कोई कैसे? सीधा सोए नहीं अभी, थोड़ा पानी गर्म कर देते हैं. कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो. ओके, 6:10 हो गया. आई एम स्टार्टिंग माई सेशन अगेन. कोई कैसे समझ आए. ठीक है. ओके, करो. और सामने घेवर हो तो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाए. कौन है यहाँ? हेलो, पहले मेरे को खाना खाने दो. इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? इज indirect and invited with the proportion represented by single transferable vote. 5/6 of the two members of the council is directly elected among the 6 members nominated. 5/6, 1/6. 1/3 member of the is council. तो क्या था? 5/6 होता है इलेक्टेड इनडायरेक्टली और 1/6 नॉमिनेटेड होता है. इनडायरेक्टली इलेक्टेड किसकी बात हो रही है? अच्छा, 5/6 जब टोटल नंबर का इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो ही जाएगा. 1/3 1/6 नॉमिनेटेड हो जाए तो 1/3 किसका पार्ट है? And then the member in the council is elected by the local bodies such as municipalities. 1/12 graduates. क्या है ये? 1/3 is elected by members of legislative assembly from among the remainder is nominated. Okay, इसके बारे में बात कर रहे हैं. Question mark. The remainder is known. The court cannot question the bona fide propriety of governor's nomination in any case. The legislative assembly of each state is directly फिर से मेरा लाइव अटक गया है क्या? खुद देखना पड़ता है. चलो चेक करते हैं. Is it working? हेलो, हेलो. काम पर here 1/12 is elected by the teachers of the secondary school. The remainder is the court cannot question the bona fide in the legislature of each state as directly elected on the basis of the number of members. The number of members of association cannot be more than 500.
but not less than 60. Cannot be more than 500, but not less than 60. और इसमें क्या था? 40 था. हमको हाथ भी धोना है. Just a second. सिक्सटी नहीं होना चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. The assembly in Mizoram and Goa have only 40 members, while the assembly of Sikkim is governed. क्या? Cannot be more than 40 तो कैसे इस exceptions है? More than 50. Governor can nominate one member of the Anglo and comment. अब नहीं कर सकते. The duration of the legislative assembly is 5 years. It may be dissolved sooner. This is a question. The duration of the legislative assembly is 5 years. It may be dissolved sooner than 5 years by the government. The duration of legislative 5 years. The term of the 5 years can be filled with parliament session. Legislative permanent body. The legislative bodies are 1/3 of the members expire every second year. The speaker and council has chairman and deputy chairman, and the provisions relating to them are analogous to those relating to the corresponding officer of the Union Parliament. Qualification for the membership of the state legislature should be president for legislative assembly not less than 25 years of the age, and for legislative not less than 30 years of the age. Should possess other qualifications prescribed in the Bihar Ban or under any 25 years of age. Okay, यहाँ पे प्रॉब्लम फंस गई. Should possess other qualifications prescribed on behalf of made by the parliament, not state legislature. ठीक है, not state legislature. Okay, चल ठीक है. कोई कैसे the strength of the legislative assembly in state duties is 403 403. The British measure 403. ये हो गया था. वेस्ट बंगाल 403 है. वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, 494 है. फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर महाराष्ट्र में है, और उसके बाद बिहार में है. बिहार में 243 है. 403 है. Comparison of the legislative differences between work and the parliament. For manual the position is same. For other bill is only the power of the council is to enter a delay of the 3 months. For other bills, the only power of the council is to
interpose a delay of 3 months in case of the video's second time referred to the Legislative Council, and this time the Council has no power to withdraw the more than 1 month. Okay. What other bills? काउंसिल में क्या कर सकते हैं 3 मंथ का डिले कर सकते हैं तो ज़्यादा नहीं है डिले 3 मंथ कोई कैसे नहीं समझ आए सेकेंड टाइम रेफर अगर होता है तो फिर आप 1 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते when a bill is presented before the government after its approval by the house क्या बात हुई थी कि हर मिनट का वो रखेंगे हिसाब रखेंगे एंड टारगेट सेट करेंगे उसके बाद मिनट लेवल पे सेट करेंगे तो मेरे को 4 मिनट में सारा अंडा गोल करना है तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था तो पानी पी ले नहीं छोड़ा फिर ठीक है in case of the restaurant the village secretary when the bill is presented before the government after with us declared assent दे सकते with the whole कर सकते with the assent whether that money will enter reserve bill for the consideration festival the law the where the law in question would derogate the powers of such reservings compulsory where the law is in question would derogate the powers of the हाई कोर्ट के बारे में कुछ बात हुई तो उसमें आपको विदहोल्ड करना ज़रूरी है कंपल्सरी वेयर द लॉ इन क्वेश्चन हाई कोर्ट के बारे में और द गवर्नेंस टू promulgate ordinances the government can promulgate only when the legislature or both the government can promulgate ordinances only when the legislature or both houses thereof are not in session. It must be decided state and the ordinance must be laid before the state legislature when it is reason. Must be laid before state legislature when it reassemble. An ordinance ceases to have effect after 6 weeks from the date of the reassembly unless disapproved earlier by an ordinance ceases to have effect after 6 weeks from the date of reassembly. यानी प्यास लगी है रुक जाओ शांत हो जाओ शांत Baba black sip have you any? Yes sir 3 bags full one for my master one for his Baba black sip have you any? Yes sir 3 bags full हाँ गरम है और गरम करो उसको रुक जाओ मेरे को पानी पी के आने दो और जल्दी प्यास लगी देना पड़ने वाला है करवा दे
तीस है और 30 कैसे भी रुक जाओ, 4 मिनट में खत्म करो इस पेज को। ठीक है ठीक है ठीक है, पानी पी लेते हैं। चलो ठीक, रामायण मत the are not in session तो क्या करेगा फिर वो तो ऐसे तरफ are not in session तो नहीं होगा। must be exercise में add and also they were considering the must be laid before the state legislature when a tree assembles. When a tree assembles, the ordinance must be laid before the state legislature when a tree assembles. ठीक है, उसके बाद है and ordinance after 6 weeks after the date of the reassembly unless disapproved. क्या ये unless disapproved क्या कहाँ date by the that legislature 6 weeks. ठीक है, और द गवर्नर इसमें ये भी नहीं दिया है मैक्सिमम पीरियड, बताओ दिया हुआ है मैक्सिमम पीरियड वाला, देख लो मैक्सिमम पीरियड 6 वीक्स नहीं है, मैक्सिमम पीरियड ये देख लेना चलते। ठीक है, गवर्नर हिमसेल्फ has consented to withdraw the ordinances or the scope of the ordinance communicating however the governor is confined to the subject placed on 7th schedule. Governor cannot promulgate without instruction from the president if the bill containing the same provision would require previous sanction of the president, which is required to be reserved for the consideration of the president. Okay, privileges of the state legislature. Privileges of the state legislature are similar to those of the union parliament. Each house of the state legislature can punish for breach of its privilege whether its own authority is under the question whether the court has no jurisdiction to interfere with the decision of house that at that point मेरे privileges के बारे में बात नहीं कर सकते,
similar to those of each house can punish for the breach of each house have sole judge. Oh my god. Sole judge and court has no duty to interfere in the decision of the house. Okay, on this point. No house of the legislature can create any new privilege for itself. No house of the legislature can create any new privilege for any of its privilege has been infringed. Court has no jurisdiction to interfere with the decision of the House on this point. Each House of the legislature can create new privilege for itself. Court special provision of Jammu Kashmir. ये अब अपडेटेड देख लेना इसको अपडेटेड देख लीजिए आप आई थिंक पंचायती राज में तो टाइम नहीं लगेगा तो तुम पंचायती राज अपनी बुक से ही कर लो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर लेना है इंटरेस्टेड कंज्यूमर 263 under article 263 263 okay the state council was constituted एक मिनट क्या करोगे हाई कोर्ट वाला देखो जल्दी से क्या करना है सुप्रीम कोर्ट वाला आई थिंक व्हाट डू यू थिंक what should I think Supreme Court इस छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है कर सकती हो तुम You can do it baby girl internet media इतना ज़्यादा नहीं करना है तो छाट लेता है ना इसमें से क्या करने क्या नहीं नो क्वेश्चन हाई कोर्ट में एक ही क्वेश्चन इधर ट्रिपल तलाक बॉर्डर एंड सुप्रीम कोर्ट में ये एक काम करो सुप्रीम कोर्ट जो कर चुकी हो वही करो ज़्यादा चेंज मत करो मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास है बनाया हुआ आई थिंक है एक बार देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट तो था कहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है यहाँ पे बट लेट्स सी हेलो एडिटेड नहीं है छोड़ दो नहीं है एडिटेड तो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है छोड़ दे मत कर छोड़ दो इतना नहीं एडिटेड कर सकते भी नहीं है टाइम इतना क्यों करेगा इंसान जब नौकरी ऐसे ही निकल रहा है हाई कोर्ट इधर सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ हटा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है नहीं तो ये देखा था सुप्रीम ये जैसा छोटा ही है ना बहुत छोटा इस जगह पे सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट किसका होता है प्रेसिडेंट करता है उसके बाद इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सब जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट as he thinks appropriate. Appointment of the Chief Justice of India. President can consult such judge of the Supreme Court and High Court as he thinks appropriate. An appointment
which is basis of India. Jesus Jefferson of India President can consult some judges of Supreme Court and High Court as they think the appropriate person is qualified for appointment as a judge of Supreme Court if he is these things of Chief Justice of India, the council and High Court as they think about the person is qualified for appointment as a judge of Supreme Court if he is citizen. Having a High Court judge for at least 5 years. Advocate for 10 years. No minimum age or fixed period. Taking minimum age or fixed period of the office is prescribed for the appointment. मिनिमम एज कुछ नहीं है, सब बताया गया, एंड फिक्स पीरियड कुछ नहीं है. ऑफिस प्रिफर फॉर द अपॉइंटमेंट रिजल्ट्स प्रमोट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है अटेनिंग द एज ऑफ 65. कब तक रह सकता है, ऐसा मिनिमम एज नहीं है यहाँ पर. Attaining the age of the 65, resigning in the writing address to the president, resigning in writing address to the president on being removed by the president. The only grounds for such removal are proof, misbehavior, and incapacity. Procedure for the removal or impeachment of the Supreme Court judge. Motion addressed to the president signed by at least 100 members of the impeachment के लिए signed by 100 members of Lok Sabha and 50 members of Rajya Sabha is delivered to the Supreme Court chairman. The motion was investigated by the committee of 3 judges Supreme Court. Investigated by 2 judges of the Supreme Court. Jurist. The committee finds the judge guilty. The report of the committee is considered in the House where the motion is pending. If the motion is passed by each judge by a majority of 2/3 members and majority not less than 2, the judge is removed after the president gives order for the removal on the such as the judge is removed. The president gives a remedy. Procedure for the impeachment is same as the judge of the Supreme Court and ठीक है. आफ्टर द रिटायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मजाक की बात नहीं है, दोनों का प्रोसीजर सेम है. तो आइए अपन लोग क्वेश्चन भी बना रहे इससे. आफ्टर रिटायरमेंट, a judge of the Supreme Court cannot plead or act in any court or before any authority within the territory of India. Within territory में रिटायरमेंट के बाद वो नहीं कर सकते जो रजिस्ट्रेशन होंगे. Original operate and ambassadors between the state of the union and between the union and any state is within exclusive original jurisdiction of the Supreme Court. Disputes between different states of the union or union and any state is within exclusive jurisdiction of the Supreme Court. And different state of the union and between union and any state is, ये एक बार लक्ष्मीकांत से देख लेना,
दिस उसमें बना हुआ नोट्स आज देख लेंगे, ठीक है। अरे डिफरेंट स्टेट ऑफ यूनियन और बिटवीन यूनियन एंड एनी स्टेट, ठीक है। तो ये हो जाए डिफरेंट स्टेट के बीच में और बिटवीन यूनियन एंड एनी स्टेट, रजिस्टर entertain an application under Article 32 for the issue of writ for the enforcement of the fundamental rights is treated as the original jurisdiction of the Supreme Court, though called writ jurisdiction. The Supreme Court is the highest court of appeal from all courts and territory of India. Supreme Court is the highest authority for the interpretation of the Constitution. Supreme Court नहीं, ऐसा नहीं बोला तो। The Supreme Court may hear appeals by granting special leave against any kind of judgment or order made by the tribunal except a military tribunal. क्या Supreme Court may hear appeals by granting special leave against any kind of judgment or order made by any court or tribunal except a military tribunal. क्यों military tribunal इसमें नहीं कर सकता, उसका एक अलग कोर्ट होता है ना। Under advisory jurisdiction the हाँ आपका लाइव काम नहीं कर रहा था, हाँ नहीं कर रहा था, अभी कर रहा ना। पता है सुबह भी ऐसा हुआ है, सुबह भी ऐसे हुआ 1 घंटे 4 से 5 चला था, बाद में जाके अभी जीत बोल रहा है कि आपका लाइव काम नहीं कर रहा। बट थैंक यू सो मच कि तुम बता के गए, नहीं तो अभी तक वही चलते रहता। So special thanks to you. Under advisory jurisdiction, the Supreme Court can give its opinion on any matter referred to it by the President. The High Court is the head of the judiciary in the state. The High Court is the head of judiciary. Every judge of the High Court is appointed by the President. So every judge is appointed by the President और removed भी होता है President से। एक्चुअली जब हम स्टार्ट करते हैं ना लाइव तो एक बार अपने टैब में देख लेते हैं, उसके बाद नहीं देखते हैं तो पता ही नहीं चलता बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट आई थिंक अब ये नहीं होगा क्योंकि ऐप ना वो पता नहीं, मेरे स्टोरेज को क्लीन करने के बाद आई थिंक अब सही चल रहा है। यूट्यूब का स्टोरेज तो भाई खैर तुम कैसे हो ये बताओ। Every judge of the High Court is appointed. In making appointment as a High Court judge, President can consult. In making appointment High Court, the President can consult the Chief Justice of India, the Governor of the state, and also the Chief Justice of High Court. In making an appointment as a High Court judge, the President can consult the Chief Justice of India, the Governor of the state, and also the Chief Justice of the High Court. मतलब सबसे कर सकता है वो बात, ठीक है। The judge of the High Court, the judge of the High Court can hold office until an age of 62 years और सुप्रीम कोर्ट में कहता था 62 years, ओके। ये क्या हो रहा है? High Court judge can leave his office by resignation and writing interest. A High Court judge can leave his office by resignation and writing interest to the President. Being appointed as President and being transferred to the High Court, any other High Court, ठीक है। Whenever the President the move
The mode of removal of the same as the ठीक है. The qualification will be justified or not more than 62, not above 62 years. What we must have held office for 10 years or 10 years as a advocate. Salaries and allowance are charged in the consolidated fund of the state, not India. जो सैलरीज होगी वो स्टेट ही देगा, ठीक है. बट रिमूव और अपॉइंटेड अपॉइंट कौन करेगा, वो है प्रेसिडेंट. एक मिनट, सैलरी तो हाई कोर्ट को ही देता है, यूनियन देता है. सैलरी तो हाई कोर्ट को यूनियन देता है. After retirement, you cannot plead or accept the Supreme Court. After retirement, a permanent judge, the High Court cannot plead or accept the Supreme Court and High Court. After retirement, a permanent judge cannot further accept it. एक कोर्ट है, कैसे रिटायरमेंट तो 62 में वो, उसके बाद कैसे कर सकता है. 35 हो गया. योर लाइफ अगेन. तो एक बार फिर से देख लेना. यार अपने को बार बार चेक करना पड़ रहा था. सैलरीज एंड अलाउंस तो प्रेसिडेंट, ठीक है. उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट भी कर सकते हैं. उसके बाद हाई कोर्ट. हाई कोर्ट क्या है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश बॉम्बे का. बॉम्बे इज फॉर दादर और महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव. एक बार अपडेटेड देख लेना ना प्लीज इसका. अपडेटेड, सी अपडेटेड, सी अपडेटेड. Interstate Council. Interstate Council Council 273. Interstate Council consists of the Prime Minister, 6 Union Cabinet Minister, the Chief Minister of all the states, administration of all duties. उसके बाद क्या है, the सरकारी कमीशन recommend the constitution. क्या है, the सरकारी कमीशन recommend the constitution of the permanent interstate council for the coordination among the state and with the union. Interstate Council is chaired by the Prime Minister and it meets twice a year. Interstate Council. The Sarkari Commission. Interstate Council consists of Prime Minister, 6 Cabinet Minister, Chief Minister of all the state and all duties. Sarkari Commission recommended the constitution of a parliament interstate council for coordination among the states and with the union. Justice R. Sarkari died in 2007. Finance Commission कितना, those should provide for the establishment. Finance Commission 70 to 73 to 75 to 80 by the President. Finance Commission by the President. क्या है ये,
first 1951. The inviting to could serve in four other members according to the qualification employment sources as a special phase have to wide experience of financial matters and they have a knowledge. ठीक है हटाओ chairman and four other members ठीक है okay the member of the commission hold office for such a period as may be specified by the president in his office and are eligible for the reappointment. So they are eligible for the reappointment. ठीक है The main function or duties of the finance commission are एक मिनट The member of the commission of the office are eligible for reappointment. ठीक है The main function of the duties of finance commission are to recommend the president the basis of distribution of the net present taxes between the central and the state. Okay. Okay, to recommend the principles which would in the granting advance of the consolidated fund the tender to advise the president on any other matter referred to the commission to suggest amounts to be paid to the state Assam, Bihar, Orissa and West Bengal and the commission submits a recommendation to the president which are generally accepted by the central government और एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और इसमें ये नहीं दिया है कि एडवाइजरी होता है ये दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक आई शुड नॉट रिलाई ऑन दिस planning commission is not mentioned in the constitution planning commission is an economic advisory body at present the planning commission consists of अरे यार ये कितने किस आदम ज़माने का है ऑफ ये ना तुम उसी से कर लो तो डॉक्स से कर रहे डॉक्स से कर लेना ये और ये भी डॉक्स से कर लो कोई कैसे नहीं समझाए इमरजेंसी प्रोविजन भी आई थिंक यू शुड डू इट फ्रॉम डॉक्स क्योंकि तुम्हारा हो चुका है महादेव पूरा फिर करके देखो तुम भी कभी ठंडा इमरजेंसी ज़्यादा बड़ा नहीं है इमरजेंसी यहीं से करो ठीक है इमरजेंसी यहीं से कर लो अरे 14 पेज का है भैया 14 पेज है बट है तो छोटा ही ना ऐसा कम ही है ना ठीक है इमरजेंसी डॉक से ही कर लेंगे नहीं मत करो यार सच डॉक से कर लेना सच में चलो नहीं यार मत करो डॉक से कर लेंगे इसको पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है कंस्टिट्यूशन पब्लिक सर्विस स्टेट पुलिस पब्लिक सर्विस state governor the state by the president requested by the governor union of the commission can serve the needs of the state if so requested by the governor of the state and approved by the president the planning of the commission of the president in the case of the and the commission of the governor of the state and the condition of the service of
This cannot be very well research within the half a person who has 10 years 10 साल होना चाहिए. Half of the members of the commission should be a person who have held office under the government of India or the state. हाँ ये सबको पता है. मतलब कमीशन में क्या होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. The term of service of member is 6 years. Okay, this is 6 years from the date of its entering. This is 6 and not 5 years. और एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए. रिटायरमेंट क्या है 65 एंड एसपीएससी का 62. ठीक है. Resignation writing addressed to the president of the government in the case of the state committee. Oh my god, 5 मिनट बाकी हैं. Resignation writing addressed to the case of the government by the president. So this is removal by the public service commission. Resignation writing to the ठंड लग रही है. President and removal by the president. President can remove member. महादेव कहाँ गया रबर मेरा. ठीक कर लेते हैं. 10 सेकेंड 5 मिनट बाकी हैं. ठीक है. उसके बाद है रिमूवल बाय द president. President can remove a member if he was adjust in some employment in the paid employment outside the the case of the state commission, and the president can remove from pass an interim order. That's basically commission also selected from the or the state. अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी actually. I can guarantee you because I am consistent. The stability improvement. Chairman and the member for the future of the government or the chairman of the UPSC is ineligible for the term in the government. The chairman of the station is eligible for the UPSC में वो जा सकता है. The member of जा सकते हैं. A member of the state public service is eligible for the appointment as the member chairman of the state public service and the chairman of the UPSC, but not for any other employment. And the public service commission and advisory bodies. And depart from it. Function of the president to conduct the examination appointment करता to advisory. Any matter is available with them. President to exercise such additional function as may be provided for by an executive. The general election is held on the basis of annual friendship. Every person who is a citizen 30 election with the president of such is called. एक मिनट ये भी देख लेना कि एज क्या है. 18 ईयर्स वाला अमेंडमेंट कौन सा है. 10 अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. उसके बाद करना है legislature of the state can call a question on the election to be with the to the Supreme Court. The specific form is mandatory. The election commission 324 324 है. इलेक्शन कमीशन 324 है और independent executive control determine number of election commissioners. Okay. Chief election commissioner is the president of the chief election who has tenure of 6 years or up to 65. Chief election commissioner होते हैं tenure of 6 years or 65.
The Senator the Chief Election Commission can be removed from his office only in a manner and on the ground prescribed for the removal of Judge Pomo. Other election commission can be removed by the President on the recommendation of the Election Commission. The Election Commission has the power to elect president. ठीक है अभी कौन है वो देख लेने के बाद ठीक है प्रेजेंट में कौन है इलेक्शन कमिश्नर ये देख लीजिएगा ओके 2 मिनट 1 मिनट और when question of the election commissioner preparation of the okay got it my god send it हो गया बस अब 8-9 पेज है जल्दी जल्दी कर लेंगे ठीक है 8-9-10 पेज है जल्दी जल्दी कर लेंगे 50 मिनट में 5 मिनट ईच करके ओके गाइस ठीक है इट्स ब्रेक टाइम कोई बात नहीं No, I'm not tired. I'm happy. भैया चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं इसके बाद फिर बात करते हैं 5 मिनट पानी वानी खाना वाना just a minute ठीक है ओके अच्छा ठीक बहुत करने के लिए बड़ी सी वाली ठीक है Okay guys, it's our break time. Anush, Pak. Promise. 17 अरे ये क्या हो गया 17 2 बार तो हम इसके भरोसे रखाते हैं बस नहीं है कोई भी देख लिया ये भी वंस नहीं है ये भी नहीं ली है ओके चलो ठीक 17 तो
Okay, we are back after a break. Let's start our last session. एक बार चेक कर लेती हूँ लाइव चल भी रहा है या नहीं चल रहा. आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होगी बट स्टिल प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके ठंड क्यों लगने लग गई है. आई थिंक ठंड बढ़ गई है. चलो ठीक है स्टार्ट कर. Elimination Commission and Lok Sabha constituencies based on the recent census. The representation for each state is not changed during the section. Oh my god, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज. However, the number of eligible passengers transit the state are changed. According to the census, the Commission in India is a high-power body whose orders have the force of law and cannot be called questionable for any. The Commission in India is a high-power body whose orders have the force of law and cannot be questioned in the court. सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है बट चलो ठीक है थोड़ी देर. Coming to force on the date is independent. In this behalf, the copies of its order are laid before the House of the People and the Legislature, but no modification were permissible in by them. In India, such a been considered about that 52, 63, 73, 2002. The recent Delimitation Commission was set up. Delimitation एक बार फिर से देखना पड़ेगा आपको. लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से बनाया है. लक्ष्मीकांत में देख लेना एक बार प्लीज देख लेना. बहुत सारे के बेसिस पे the Constitution of India was after 2026. ठीक है. The election for अगले census भी है. The election was all the states and union territories along with the Commission of India are members of the Delimitation Commission. Supreme Court 7985.
Number of reserve seat. So there are also many associations that could not perform data machine. The official language of the Union is Hindi and Devanagari script. 343. English also continued placement of service till 97. The first original official language convention of 1945 was B.G. Khate as chairman, and it recommended the reason that was the language of the state. I mean, Article 345 to tackle the issue of the official language for each language of interest. The legislature of a state can adopt any or more languages used in what is the language of the authoritative text. Article 345 to tackle the issue of the legislature declare adopt any or language is the institution for the official purpose. There is also proposal for the instrument. It is upon popularity in terms of the Supreme Court and High Court and the authority takes of the law. And the Parliament and this is the time for the all proceedings of the Supreme Court and High Court until the Parliament by law provides otherwise. Unless all Supreme Court and all bills or the two all acts passed by the Parliament or the legislature of the state or the governor of the state, all the orders, rules, or regulations take a state legislature and prescribe the use of any language other than English, and acts passed by except or subordinate legislation with the language included the eighth. So that's all right. Then send it. Included the पता है कौन है फिर ठीक है to have member to consider to be considered for contribution toward the development of entertainment. थोड़ा ही जल्दी जल्दी में ठीक है जल्दी जल्दी में कर लेते हैं और क्या lab to its length is 2 to 3 ratio to bed 2:3 ratio क्या है 2 to 3 in the center what is the research for design for they like pata 2047 after button student the flag for the and for the Western National News has in the midnight of 40th August 1947. For the first time, the national flag of India was hoisted on the midnight of 14th August 1947, that is 15th August. And this
state simultaneously state evidence forward line capital. There are 4 lines standing by between 4 lines है सबसे गंदे इसमें क्या है एलिफेंट हॉर्स बुल लायन क्या DHBL खेलता ना सेपरेशन में they said lotus are oh my god polystyrene themselves in this step on the one subsequently only 3 lines in this case I do difference only 3 lines the first line is if you the variables are related and the second is जाते from the सातवें में जाते from मुंडक उपनिषद ठीक है meaning उत्तरंग and the profession this script में तो oh my god ये भी होने वाला है देवनागरी script just a second शायद हो भी रहा है बातें तो ही जान मैं तो बस तन्हा जान the use of the estate abdomen and the song that we composed Summer 27 December 1911 at Kolkata session. So पहले कहाँ 27 December 1911 ठीक है कोलकाता स्टेशन जनवरी कंपोजर जनवरी 24 जनवरी 1950 ठीक है कोलकाता सेशन में हुआ था उसके बाद था चेयरमैन विष्णु नारायण दत्त पंडित विष्णु नारायण दत्त थे एंड किस सेशन में हुआ था कोलकाता सेशन में ठीक ओके विष्णु नारायण दत्त अभी क्या चलिए एक होना ही होगा just didn't know this is 5 stanzas कितने stanzas Rabindranath Tagore the complete song consists of Rabindranath Tagore in Rabindranath Tagore published Tattva 1950 Bharat was with the title of the entire translated it Pandit Tattva Bharat was with the translation in morning songs of India ठीक है the creator composed the present tune of our national anthem goes to Captain Ram Singh Thakur अच्छा so this is Ram Singh Thakur playing the 40-52 seconds the short version song in the weather composed in Sanskrit by Vande Mataram Surya Ram Vada Sitalam Shashishamala language ठीक this is Sanskrit and by Bengali the struggle it has unequal status depending on the first political vision when it was sung at 1896 session of National Indian Congress. The Congress replaced
26 January 1959. Then this song is 1 minute and 5 seconds. Okay, 65 seconds. तेरी बातें तू ही जाने मैं तो बस इतना जाने 65 seconds. ठीक है, उसके बाद क्या है? Nobody can be forced is to sing. No one is to sing. Be forced. Session of the Parliament begins with Vandana and concludes with Vande Mataram. Wow. ठीक है. Jana and concludes with Vande Mataram. है ना? सेशन ऐसे ही होने चाहिए. The national calendar based on the Saka era. Saka era. Chaitra of the first month. कौन सा फर्स्ट मंथ? देखो यही क्वेश्चन आ गया था. सब पूछ रहे थे कहाँ से लूसेंट से भी है. At the first month and a normal year of 365 days was adopted from 22nd March 1957. Love beginning of which 22nd March. 22 March 1947. ठीक है. उसके बाद क्या? गैजेट्स ऑफ द इंडिया all in narrative official purposes gazette of India calendar issued by the government of India government communication okay, so the days of the national calendar have a permanent correspondence with the dates of the treasury. Dates of the nation have a permanent correspondence with the dates of Chaitra on 22 March. The magnificent tiger continued to grow. This is Panthera tigris. तेरी बातें तू ही जाने मैं तो बस इतना जानू. Panthera tigris. बर्ड की है. पिकअप का नाम है पाबो क्रिस्टेसिस नेलुम्बो लोटस नेलुम्बो न्यूकिपीरा चुबे फिकस बेंगालिस पता नहीं क्या मैग्नीफेरा इंडिका. भैया बहुत ही अजीब नाम है. The mammal can driver of dolphin. Act of God is direct, violent, sudden, and Act of the Parliament, Act of the State, Empress of the Parliament, Adjournment of the House. एक बार ये भी देख लेना ना. एडजॉर्नमेंट वाला एडजॉर्नमेंट हाउस एडजॉर्नमेंट सीनेट वाला ये देख लेना बुक में. ठीक है. तेरी बातें तो जाने अबोरिजिनल परमिशन that oath amendment होगा एंग्लो इंडियन होगा.
अच्छा ये बात है ना। मैंने अभी लगा प्रिपरेशन भी लगा बताया 24 डिज़ाइन बहुत स्पेशल सेट तो भी लोग बैकवर्ड क्लासेस हो गए एवरी 10 year ballot हो गया मेगा हो गया is the labor or service extracted of code out of portion of power हो गया दे लोग रेशियो पर बजट हो गया बुलेटिन हो गया कैबिनेट सेंस मोशन तो हो गया सेटल ऑडियो हो गया और चीफ चीफ अच्छा वेट तो मुझे पता है क्या होता है तो मेन होता है हेलो 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 ऑडिबल 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 closer is a coalition thank god it's audible पता है फिर से ना इससे पहले जो लाइव स्टार्ट किया था 3 बजे वो मेरा ख़राब हो गया मतलब उसमें ब्लैक ब्लैक आने लगा फिर से मेरे को बैक करना पड़ा मतलब उस लाइव को ख़त्म करके दूसरा लाइव स्टार्ट करना पड़ा देख रहे हो क्या हो रहा है closer is a parliamentary procedure with petition petition usually takes place in the multi-party system फिर जाके यूट्यूब का ना वो डेटा क्लियर किया तो अभी चल रहा है ऐसे आई थिंक अब चलेगा देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है कंकरेंट जैसे सा respect considered fundamental association considering contempt report as a disobedience to the disregard of the rules, orders, classes, or dignity of the court which has power to punish for such offences. Other condemnation offences is placed at disposal of condemnation पता कोर्ट पता डिबेट पता डिफेक्शन पता डिलीगेशन पता डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है एग्जीक्यूटिव पता है डिप्रीवेशन पता है डिपेंड पता है पता है डिविडेशन पता है डबल जीओपार्डी क्या होता है द सब्जेक्शन ऑफ द अप्रोच पर्सन टू रिपीटेड ट्रायल फॉर द सेम प्रोसेस ऑफ लॉ मेरा ना कंधा टूट जाएगा कुछ दिन बाद ओ मम्मी कैसे तुम लोग बैठ लेते हो लाइब्रेरी में इतने देर मेरी तो बैंड बज जा रही है The process of law is a law in conformity with due process of concept adopted by is a law in conformity with the due process of concept adopted by American Consortium. The process of law which hears before it condemns. ये भी देखना जरूरी है Election is an act to select one or more from a greater number for the election purposes into the equal protection equality existing law equal protection equality existing law expulsion क्या होता है the sitting of the member of the offense committed against the extradition क्या होता है तो surrender by the foreign state of the people approach gathered is the official newspaper of the government gazette it is known as the gazette of the
गवर्नमेंट का अब इसका पता है हम पार्लियामेंट में नो पार्टी हैज़ वॉन अ वर्किंग मेजॉरिटी. इम्पीचमेंट तो पता है. सिटिंग locus standi means a place for standing or right to be heard. Maiden speech. Hello. Maiden speech is an arbitrary in its decision and is not built on it. Maiden speech is one's first or earliest speech, especially in parliament. मम्मी बहुत ज़्यादा हो गया यार. Martial law is an arbitrary decision. The toughest half an hour is this 7:30 to 8. Hi, hello, user. Locus martial law is arbitrary in its decision and is not built on any settled plan. So minority is racial. Migration minority is a racial disease. What it's me? Migration is coming to India. I think मेरे पास ना टेक्स्ट लेट आता है. हेलो हाय यार, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया. अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का. Migration minority is a racial disease or political group smaller than different many. There is a bill which contain only provisions. मोशन पता है, ओथ पता है, ऑफिसर प्रॉफिट पता है. चलो ठीक है, हटाओ. With and substances is a doctrine relating ठीक है. प्रिजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रिजम्पशन क्या है? The exception right or advantage. Privy purse is the sum fixed by the government of India. यार मेरा नहीं हुआ है अभी तक कुछ भी. पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ है. अभी सोचो कितना कुछ बाकी है. मैथ्स बाकी है, करंट अफेयर्स बाकी है, हिंदी इंग्लिश बाकी है, और इतना बाकी होना कम है. ज्योग्राफी भी बाकी है. Time fixed for asking and answering the oral question. Coherent पता है, quorum पता है, regional distribution पता है, legal equivalency. क्या है ऐसा? contradiction for each other क्या है? set plus consider रूल होगा. रूल ऑफ लॉ में क्या है? कैसे होगा? 10 दिन है बस. कितने दिन है अब? बहुत कम. 27 हो गया ना. 4 से 8 9 10 11 दिन है यार. रूल ऑफ लॉ एक बार देख लो यार, इसका डेफिनेशन क्या है मेरे पास. सेशन साइड का मिनट हो गया, स्टेट हो गया. वोट एंड अकाउंट इज एस्टिमेट और एन एडवांस पेमेंट टू इनेबल द गवर्नमेंट. ठीक है, 0 और हो गया. तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस उतना जानूं. यार 10 दिन में क्या होगा? 20 मिनट में 40 पेज पढ़ सकता है. 2 मिनट करके नहीं. 40 पेज पढ़ना है. मेरे पास 20 मिनट बाकी है बस. 40 नहीं, 45 पेज. लेट्स स्टार्ट.
चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा महादेव, कुछ तो कीजिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 40 पेजेस, 40 पेज in 20 minutes. The present constitution is 22 parts, 22 system of the instrument law reflection on the state of regulating। तो पता है क्या होगा, 70 वाला और क्या होगा, तो ये कर लेना पेज से, ठीक है। एक्स कर क्या करेंगे, पेज से तो एक्स कर लेना। डेट 1961 हो गया, 88 हो गया, 1915 हो गया, ये सारे हैं फाइनल कमीशन। ठीक है, पहले तो ये करो कि एक्ट्स करना है, एक्ट्स करने हैं किसे, एक्ट्स कर लो। एक मिनट रुक जाओ, रुको, शांत हो जाओ। एक्ट्स करने हैं पेज से कर लेना, ठीक है। गवर्नमेंट तो पता है, 7 कमीशन का क्या 1927 में आया था। और इसमें क्या है, 7 कमीशन खैर उसमें भी है, मॉडर्न में है ना, तो छोड़ो हटो। ये हो गया, क्रिप्स मिशन भी है मॉडर्न में, कैबिनेट मिशन भी है मॉडर्न में, तो ये हटा दो। माउंट बटन प्लान भी है, the government constituted assembly to frame constitution by the country member of the constituent assembly were elected by the president of each province and each Indian state were allocated seats in the proportion to the remaining of the states of were constituted by the committee। तो कमेटी वाला किसमें है, कमेटी वाला तो कहीं तो पढ़ा हुआ है ये, क्या मेंशन, ओके चलो ठीक है। कमेटी बात करते हैं कि रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ एडहॉक, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे हैं राजेंद्र प्रसाद के। ये हो गया, और स्टेट कमेटी हो गया, एडवाइजरी वाला हो गया, फंडामेंटल सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का एक और था ना, प्रोविंशियल वाला भी था ना वल्लभ भाई पटेल का, इसमें दिया ही नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर है, हाउस कमेटी पर सीतारमैया है, फंडामेंटल माइनॉरिटीज कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, ओके। क्या आंसर आता है इस वोटिंग बाद से the total number of the members of the council is 385 representation from Indian and the political parties of the December 1946, 9 दिसंबर को हुआ था फर्स्ट मीटिंग, ये पता है। क्या उसमें है ना, ठीक 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 2 years long the objective December को फर्स्ट टू मेंटेन इंटीग्रिटी। अब सबको पता चला होगा शिवानी कैसे पढ़ती है, मतलब कितना क्लमजी होके पढ़ती है ना। द प्रिंसिपल ऑफ कुछ भी करके कॉन्स्टिट्यूशन में कमेटी, there was a general discussion in the assembly about the committee 29 अगस्त को, ये है उसमें, ठीक है। 21 फरवरी 1948 ड्राफ्ट 1948 को किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, सबमिट करो बियर मेरे को सबमिटेड द ड्राफ्ट कंसिडरिंग 20, ओके दिस इज इम्पोर्टेंट। टाइम अप हो रहा है हमारा, कैसे होगा, कैसे कैसे, चलो ठीक। मेंबर तो पता है कौन कौन है, इसको हटा दो। The third and final regional, the third November 26 understand the signature of the president, third and final, ठीक है। पहले 3 रीडिंग हुआ, 3 represents and the judge manager the president and the president then read past the declaration of relief in the
सोर्सेस पता है, आई नो दिस वन। तो ये है मेरे दूसरी बुक में। चलो डालो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जो तो मुझे ये तो याद है। 31B 31C से ये भी पता है, DPSP का 51 ये अभी याद करके आए हैं। 79 ये शायद मेरे को करना पड़ेगा। आई थिंक आर्टिकल्स तो करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आर्टिकल्स याद है नहीं अभी पूरे। आर्टिकल्स करना है लक्ष्मीकांत से, ठीक है। चल के तुझे देख चल पढ़े। शेड्यूल्स तो पता है यार इसको तो, ठीक है। चलो ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो फर्स्ट इज 9 शेड्यूल 11 पार्ट बी के लिए रहा है। देन आई थिंक 1 मिनट रुको, बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा है इसमें भाई, बहुत है। अमेंडमेंट्स तो मेमोराइज करना पड़ेगा, बट यू हैव टू रीड इट नो। क्या करेंगे? नहीं, इसमें से देख लेना, पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत सर, some special features of the Indian the constitution of the length is 395 442 442 470 470 है ना? ये क्या कह रहे हो सर? It's 470 not 442. Total number of articles. Total number of articles in Constitution at present. जल्दी कीजिए जल्दी। 440, अरे यार तो मेरे नोट्स में गलत है, 470 है। अच्छा 448 470 था मेरे को, किस बुक में दिया है? लक्ष्मीकांत में 478 4 चाहिए 12 क्लास का न्यू बैच। हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट ही चाहिए 12th क्लास का न्यू बैच, मतलब बैच की ऐड कर रहे हैं आप, या आपको लगता है कि आई एम सेलिंग बैच? सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। लक्ष्मीकांत में 470 दिया है, तो आई विल गो विथ लक्ष्मीकांत, नॉट दिस 22 पार्ट्स 25 पार्ट्स 25 पार्ट्स। क्यों कंफ्यूज कर रहा है भाई? चलो हटाओ 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 हटाओ, इसको लक्ष्मीकांत से करिए, दिमाग क्यों लगा? ठीक है। पढ़ चुके हैं तो ठीक है। प्रेमल अब आता है, पता है लैब्स ऑफ द पार्लियामेंट when the Indian President had declared the lapse of the Sergeant Supremacy of the Crown as from the appointment ये क्या है? और फिर refer order of the government। No, I don't need this appointment, ठीक है। Integration and merger of Indian states. Oh, okay. The freedom due to the Patel scheme after the part. क्लास का न्यू बैच चाहिए इनको। जैसे 16 मर्जी पार्ट ए में हो जाए, पार्ट ए है, पार्ट बी बनाया, पार्ट सी बनाया, पार्ट सी। ओके, द मशीन डिटेल है।
अगर मर्जर देखना है तो वो वाला टेबल देख लेना, लक्ष्मीकांत टेबल देख लेना। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यूनियन ऑफ द यूनियन एंड या फर्स्ट आर्टिकल तो देखना ही पड़ेगा आपको। रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है तो उसमें basically to create a new state or neither other one or the president may refer the state to the state legislature। तो रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी इधर हाउस से भी कर सकते हैं, ठीक है, न्यू स्टेट और अल्टरिंग बाउंड्री के लिए, बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। टाइम लिमिट होता है इसमें। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। ओके, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ द स्टेट and simple majority, and it is not as not necessary of unitary with okay, this is important. The study will be made for the independent duties ठीक है। ठीक है, द बॉम्बे रिवर द बॉम्बे रिवर और महाराष्ट्र बॉम्बे ने क्या बॉम्बे को क्या किया, बॉम्बे सिक्किम was made part 30। ये क्वेश्चन आया था 36th अमेंडमेंट। गवर्नमेंट सेपरेट रहते थे। छत्तीसगढ़ ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 नवंबर। उत्तरांचल और ये झारखंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट, ओ माय गॉड, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ जुलाई 2013 gave a go ahead to create तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2013 में। इतना टाइम हो गया, अच्छा नहीं बना तो 14 अच्छा ठीक है। The Constitution of India provides for the civil and constitutional ये भी तुम एक बार ना लक्ष्मीकांत का देख लेना, और दैट्स इट। सिटीजनशिप एक बार तुम लक्ष्मीकांत से टेबल देख लेना, लक्ष्मीकांत। ओके, नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ा हुआ है, क्या करें, फंडामेंटल राइट्स हो चुका है, ये भी हो चुका है। मंडल कमीशन का क्या है, 9 जजमेंट्स ऑफ क्वेश्चन कर सकता है, 9 जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंदिरा पॉपुलर मंडल कमीशन केस अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन एंड हाई एवरीवन, आई विल कंप्लीट so many pages in just 6 minutes। मतलब बस 6 मिनट बाकी है, मेरे को बहुत ज़्यादा करना है, तो मेरी स्पीड देखिए, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। The language is to what is linked to the access or it is popular in Monday is the government of those from the implement that under article was the community class from the better the board and the court is the result by a classroom of the community and the magic 3 million on the basis of 3 million. The reservation contemplated not exceed 50%. The reservation contemplated in Article Section 4 should not exceed 50%. Reservation of personal initial government the matrimonial commission was set up in 1973. मम्मी ये 20 मिनट कैसे गए पता ही नहीं चला। 6 मिनट 5 मिनट बाकी है।
नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 40 पेज नहीं हो पाएगा, अभी 29 हुआ है बस। ठीक है। और 77th amendment है, thus provided आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 19 वो तो पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत प्रिविलेज मिल जा रहा है कट करने का। आर्टिकल 70 आर्टिकल 20 पता है, 21 पता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 22 पता है, 23 पता है, 25 पता है। वाह, सारे आर्टिकल्स वाले कट गए। रिट्स पता है, वारंट हो गया। ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो ये फंडामेंटल राइट्स कैसे नहीं हुआ? अगेन अ क्वेश्चन, ये दोनों बुक मिलकर ना कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लक्ष्मीकांत के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, बट यहाँ दे रहा है कि इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। खैर मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, 3 मिनट है बस। डायरेक्ट फॉर पेनल्टी इन द केस में डिले रिसीविंग आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में कौन कौन आएगा? ये लक्ष्मीकांत दिया, एक बार तुम प्लीज़ देख लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लक्ष्मीकांत में इसको देख लेना। ओके, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल, ये भी टेबल है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो पढ़ा हुआ है, चलो हटा दो। अमेंडिंग नहीं हो पाया आज भी मेरा। डन विद द डे, ख़त्म हो गया मेरा टाइम। ओह, प्रेसिडेंट तो आज हो गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है। लेजिस्लेटिव पावर्स पार्टी का ये आज ही हुआ है ना, वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है मेरा। कैग अटॉर्नी जनरल, ओके, तो जितना हो चुका था। ओके डन, बस एक अमेंडमेंट रह गया, तो अमेंडमेंट मेरे को नोट से ही करना है। एक मिनट पहले ही सब्र कर गया। ऐसा परो धुरंधर कि 1 मिनट में यार, अभी कल कल सुबह याद करना है सब। मेरा क्या होगा, अभी तक क्वालिटी नहीं हुआ। हेलो, मेरे जाने का टाइम आ गया है। दिस इज 3-4। अरे एक्चुअली भरा हुआ था ना, तो सब हो गया, बट वही है कि एक बार रिवाइज अच्छे से करना है सब कुछ को, और अमेंडमेंट वाला पढ़ा भी नहीं हुआ मेरा, तो वो भी पढ़ना है कल सुबह। और मतलब कल भी लग जाएगा टाइम पॉलिटी में, 3-4-5 कल उसका पूरा सुबह जाएगा मेरा पॉलिटी में, जबकि आज मेरे को पॉलिटी कंप्लीट करना था। अलार्म बज रहे हैं, चलो ठीक है, जाते खाना खाने। यार कब होगा मेरा मेरा कैसे होगा यार? अभी तो पॉलिटी मेरा स्टैटिक नहीं हुआ यार, सोचो तो कैसे स्टूडेंट है। हिमांशु, तुम यहीं पे थे? तुम गुड नाइट करने आए हो 8 बजे देख के? ओके बाय बाय। यार मेरा बहुत टेंशन हो रहा है। 10 दिन में 10 दिन है बस यार। मैथ्स करना है, करंट अफेयर्स करना है,
स्टैटिक बाकी है। चलो ठीक है, रोने का मन कर रहा है मेरा। बाय बाय, गुड नाइट। एक बार देख तो ले क्या करके है आज। कैसे होगा यार 10 दिन में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रोया मैं, वो दे रहा है। और मतलब अभी समझो बस इसलिए सो रहा है ना कि कल सुबह भी उठना है, नहीं तो मतलब बेचैन ऐसा मन हो रहा है ना कि सोने का भी मन नहीं कर रहा। लग रहा है कि बस पढ़ते रहे। लेकिन कल सुबह उठना है, फिर 10 दिन को ख़राब नहीं करना है, इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। क्या है इसका क्या किया अभी आ गया पॉलिटी लूसेंट रीडिंग हुआ। चलो ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, तुम लोग भी आराम करो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय हिमांशु, बाय प्रेम, एवरीवन, गुड नाइट। कट कर रहा है।